हमको given that the n integer n is odd, n is odd ଦେଇଛି ଆମକୁ if n square is odd एटा ଦେଇଛି हमको देखा होछ रे yes sir अच्छा Yes, sir. सब बड़े implication जेतबे ଦେଇथिबो किबा डबल implication ଦେଇथिबो ଆମେ सब बड़े ताको भांगी देकी p किए q किए देखिबा एटा कोन p एटा जो अंडरलाइन को एटा लख ता माने given that this so हमर p के हबो so let p टा को हमें नै जिबा गोटे स्टेटमेंट के हबो the integer n is odd the integer n is odd है q गोटे दबा कोन ना n square is odd बुझे होछ रे yes sir p q समस्त जानि परलो कुमती आसिला ए आईएफएफ जो लिखा है जे ताको हम एटा गोटे कोन डबल इंप्लिकेशन ए आईएफएफ जगह रे कोन लिखाई परिबो आईएफएफ जहा ता जगह रे हम लिखि परिबा कोन If and only If and only if. हां वेरी गुड हैला तेनो तुमे देखिबो देखिछि इफ एंड ओनली इफ भी देखिबो जदी हमें सेटा लिखबा ताले एटा n स्क्वायर इज ऑड p q पाई गेले हमें yes sir. अच्छा Yes, sir. तापर देखो मु पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखु the given statement हमें जोटा देछि the given statement is हमें given statement टा कोन देछि ना p iff कोन देछि q एवला देछि ए जो given statement हमें जो लिखतिली given टा ता माने एटा को हमें ए जो फॉर्म को आसे given statement is in order to check the validity हमें validity check करिया पाई in order to check the validity of validity we have to show that the validity of the following statements we have to show the validity we have to show or check we have to show the validity of the following statements of the following steps of the following statements और हमें देखो स्टेप भी लिखि करी फॉलोइंग स्टेप्स टा वैलिड होबा दरकार ता माने कोन आसीबो स्टेप 1 ने कोन आसीबो अच्छा देखो एठी कोन अछि p डबल इंप्लिकेशन q अछि ता माने एटा कोन लिखबा p इंप्लिकेशन q इंप्लिकेशन उल्टाटा ले कोन होबो एठी p रहइबो एठी q रहइबो q रु p को आसीबा बुझी होछ रे yes sir अच्छा स्टेप 1 ने कोन करिबा हमें स्टेप 1 ने देखेबा if p then q बुझेला त माने if p then q टा ट्रू होबा दरकार स्टेप 2 रे कोन देखेबा स्टेप 2 रे देखेबा if q then कोन ना p if q then p माने आगे q टा लेके p टा को देखेबा बुझी पारला yes sir Yes sir. ए दीटा स्टेप रे जे आसीबो से दीटा को ट्रू होबा दरकार हेले जाईकी स्टेटमेंट टा हमर ट्रू होबो बुझी पारछ अच्छा तापर वर्तमान हमें कोन करबा स्टेप 1 टा जो लिखा है जे सेटा को हमें वैलिडिटी चेक करबा कोन लिखबा देखो स्टेप 1 ने कहूची if p then q if p then q अछि एटा कमा दे देबा एटा को देखेबा it is
written as आको केमती हमें लिखि परिबा ना आई जो f epp then q अछि हमें लिखि परिबा केमती लिखिबा ना if n is odd integer then n square is odd n square is odd ता माने ए स्टेटमेंट को हमें आगे प्रूफ करबा बा ट्रू देखिबा ताले कोन करबा देखो एटा को देखिया माने p टा को ट्रू देखिबा माने इंप्लिकेशन टा को हमें देखिबा वैलिड कि नहीं इंप्लिकेशन केते बळे देखांती हमें ट्रू करिया पय हमें एटा को आगे अज्यूम करबा देखिबा n स्क्वायर टा भी ऑड होछि कि नहीं तुने हमें कोन करबा लेट अस assume जे कोन अज्यूम करबा n is odd n जदि odd हबो odd इंटीजर को हमें केमति लिखंत रे खाली एटा के स्टार्टिंग चैप्टर दिला आ सब आ पर मारी चली देखो m belongs to z अच्छा हमें वर्तमान कोन करबा हमको कोन दरकार n स्क्वायर केते आसीबो रे 2m plus 1 रो होल स्क्वायर a plus b रो होल स्क्वायर ता माने केते आसीबो एठी 2m रो होल स्क्वायर plus 1 रो स्क्वायर plus 2 into 2m into 1 ताले this implies n स्क्वायर केते आसीला 4m स्क्वायर plus 1 plus केते आसीगला 4m आसीला आको हम लिखि परिबा 4m स्क्वायर plus 4m plus 1 ता माने आपको आउट के सिंपलीफाई कर देले ए दुईटा टर्म गोटे ब्रैकेट रखि देबा आको भीतर 2 कॉमन नै जिबा केते आसीबो 2m स्क्वायर plus 2m plus 1 देखाउछ रे Yes, sir. Yes, sir. एटा बुझेला Yes, sir. Yes, sir. एटा Yes, को sir. 2t plus 1 नै जाओ ताले n स्क्वायर टा भी को फॉर्म रे आसीला where t equal to 2m square plus 2m which also belongs to z which is कौन n square is कौन which is odd ता माने कौन हला 10 n is odd means then odd 10 n is odd means then हमें कौन देखेले n square Yeah. is odd आसीगला बुझला नहीं hence हमें कौन लिखि परिबा if p then q हमें एटी कौन लिखतिले मु ए लिखतिले देखो if p then q ए जिंसडा लिखतिले ताले if p then q दा ट्रू हला ना नहीं कौन लिखिबी if p then q एटा को लिखि परिबा is true बुझेला रे Yes, sir. Yes, sir. एटा को स्टेप गला Step 1. स्टेप 1 ता माने हमें को बाटे फॉरवर्ड पड़े गले ता माने स्टेप 1 काम if p then q टा को ट्रू हे गला ता माने p इंप्लिकेशन q टा तमरो ट्रू हे गला तापर नेक्स्ट कोटा देखिबा ना q If इंप्लिकेशन p हैला q इंप्लिकेशन p बुझियो छी yes, sir. Yes. ए स्टेप 2 टा के जिबा स्टेप 2 के जिबा गले देखो सिंपली लिखुची जिबा स्टेप 2 स्टेप 2 रे कौन लिखि जे देखो ना if q then p लिखि देबा if q then p एटाला स्टेप 2 ता माने से कहूची इट इज रिटन एज स्टेप 2 रे जा हम डिफाइन करछे एटा को हम केमति लिखि परिबा इट इज रिटन एज केमति लिखिबा ना if n square is odd then n is odd बुझि परछ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तापर सेठी जेमति लिखितिले सी बडा जिबा देखो हम लिखुची जानि परछु कि नै ता माने टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द अच्छा एठी गोटे देखो एटा हमें
सेठी कोन थिला n रु n स्क्वायर को हमें पढ़ि जाउले इजीली बुझी परछो कि yes sir, एठी टिके उल्टा अछि देखिबो जोटी सब माने छोटो रु बड़ होउतबो किछ असुविधा नै एठी कोन अछि हमर एठी n थिला हम n स्क्वायर देखैले हम n स्क्वायर इज ऑड अछि देन n इज ऑड ता को हम प्रूफ करिया हेले हम एटा कोन करिबा आर कंट्रा पॉजिटिव नबा त लेखो टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट we will use contrapositive method contrapositive टा कोड implication यूज हुए ना नहीं Yes, sir. हां ताले एठी वर्तमान एटा लेखसाला परे मते को से contrapositive statement टा कोन हबो so the contrapositive statement is तामाने एटा को प्रूफ करिबा चाहा ए जो स्टेटमेंट टाइप लिखुची ताको प्रूफ करिबा सेया से स्टेटमेंट टा कोन हबो मते को के कहबो some going हां को देखिबा if n is not odd, वाह वेरी गुड इफ n is not odd then n Then square is not odd. very good then n square is not odd अच्छा not odd माने कोन करे even. इवन है Sir, नहीं हां Yes, sir. Yes, तामाने sir. तामाने एटा को हमें वर्तमान देखिबा एटा ट्रू होची कि नाही एटा हे गेले हमर स्टेप 2 टा कंप्लीट हेची हैला अच्छा वर्तमान देखो केमती ताको लिखुची ताले एठी देखो हमें एटा नबा लेट n is not odd n is not odd ता माने कोन that is or this implies n is कोन even then ता माने n टा कोन हबो 2k 2x 2m 2x बा Yes, sir. 2k नबा k belongs to z set अच्छा ता माने हम कोन अछि n स्क्वायर केते हबो 4k स्क्वायर ता माने एटा को 2 इन 4k स्क्वायर हबो ना नाही रे yes sir, Yes, sir. 2 into 2k स्क्वायर लिख परबे ना नाही yes sir, ता माने n स्क्वायर केते हला 2 into p लिखि दियो where p equal to केते हबो p equal to 2k square this belongs to z बुझला Yes, sir. ता माने n square is what n square is even ता माने n square is what not odd ताले प्रूफ हे गेला ना नहीं Yes, sir. yes sir, तामने हमें कौन लिखिले 10 n is not odd implies n square is not odd हैला तामने hence step 1 and step 2 hence from step 1 step 2 hence from step 1 and step 2 we conclude that conclusion ba learning Sir, P if if and only if Q. hela bujhela eta is true. Yes, sir. conclude that is true or valid this is valid or true bujhela Yes, sir. तामने तुमको जदि देथिबो ए टाइप रो क्वेश्चन तुम आराम से कर देबो डबल इंप्लीकेशन Yes sir. अच्छा आउ आप